If a 14 centimeter long pendulum oscillates through an angle 12 degree, find the length of path. अभी हमें ये पेंडुलम दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर का पेंडुलम दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करता है। इसका एक 12 डिग्री है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पाथ। ये लेंथ ऑफ पाथ इसका मतलब ये हमें ये यस फाइंड आउट करने का। सो गिवन थिंग रेडियस radius is equal to 14 centimeter and subtended angle that is theta, that is 12 degree। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 12 into pi upon 180 radians। 12 1 the 12 1 the 12 5 the 60। So this is pi upon 15 radians। अभी हमें लेंथ ऑफ पाथ निकालने का। तो लेंथ ऑफ पाथ मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क that is equal to s, that is r theta। So 14 into pi upon 15 radians। So this is 14 pi upon 15 centimeter। So length of path is equal to 14 pi upon 15 centimeter। Now we take second example. 20 meter of wire is available for fencing of a flower bed in the form of circular sector of radius 5 meter. Then maximum area in square meter of a flower bed। 20 meter available 20 meter wire is available for fencing of flower bed which is in circular sector। मतलब ये पूरा पेरीमीटर दिया है सेक्टर का। दैट इज व्हाट 20 meters मींस पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है 20 मीटर्स दिया है। और सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 5 मीटर, रेडियस इसका 5 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? इस रेडियस, ये रेडियस और ये यस, ये तीनों का एडिशन कर लेता है हमें। आर प्लस यस इज इक्वल टू 20 मीटर्स। नाउ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा। तो इंस्टेड ऑफ यस विल राइट आर थीटा। So r plus r theta is equal to 20। अब यहाँ पे रेडियस कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर दैट इज गिवन। तो 5 प्लस 5 थीटा दैट इज इक्वल टू 20। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 10। तो थीटा इज इक्वल टू 10 बाय 5। तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियंस। ये थीटा कितना है? ये 2 रेडियंस है। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस फ्लावर बेड इन स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। दिस इज हाफ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2।
So this is 25 into 2 upon 2. 2 will get cancelled. This is 25 square meter. So maximum area of flower bed is equal to 25 square meter. So please subscribe the channel.